रिलैक्स। मोस्टली आज आपको मिल जाएगा। अभी तक जो पढ़ा है, आज जो पढ़ाऊंगा वो सब, आज नहीं तो मैक्सिमम कल आपको सब कुछ मिल जाएगा जो अभी तक पढ़ाया है मैंने। डोंट वरी। अगर आपकी नोट्स भी इसी में से बनानी है, that you have to decide. Actually you have to decide, come on. If it is sufficient for you, then no problem. If you find that it is something incomplete or insufficient, then you can go for reading other books, and you can write your own notes also. I don't have any issue. So ultimately you have to decide, the point is. All right, so good morning or good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yeah, thank you. Afternoon, Thank you. sir. Good So, afternoon, sir. I hope you people are also doing well, equally well, and again you are also fighting hard for what you can say, everything. So, in a last lecture, technically, we have brushed up very basics of your elasticity. Sorry, not elasticity, collision process. So, I hope uh, in the last lecture I could convince you people that what is the basic or ultimate aim of studying this collision process and all other things. I hope that was clear to you people. And if at all you still have any doubt, then you can message me in this team framework itself. All right. So feel free to contact if you have found any query regarding anything. All right. So let us proceed further for the remaining part of this particular topic. So in the last lecture we have seen the what is the basic difference between elastic collision and inelastic collision, and so the main conservation law that you have to take care of, that is your conservation of linear momentum and the conservation of energy. So far, so good. We have not talked about the conservation of angular momentum. That probably we will do with the next chapter, not in next unit, but next chapter, probably in tomorrow's lecture itself. We will go for it. So, in you know that the conservation of momentum and energy. So, please be extra careful that you have to consider the conservation laws before the collision and after the collision. So the suppose जो लेफ्ट हैंड साइड है जो दोनों इक्वेशन में, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज टोटल टोटल linear momentum and total kinetic energy, and right hand side is total linear momentum and total kinetic energy. So the linear momentum, combined linear momentum before the collision and the combined linear momentum after the collision, it will remain the same. And if you talk about the kinetic energy before the collision of suppose the colliding particles say A and B, so the kinetic energy before collision and the kinetic energy after the collision combined should remain constant. If this is happening, then one can simply say that the collision is elastic collision, or else it is a inelastic collision. So probably in our last lecture we have seen a extremely simple, but at the same time you know that it was very important to understand the concept of this energy and momentum. So last lecture we have seen a simple experiment so that you can identify what is what you can say, what is the basic meaning of, or how you compute or how you calculate the energy and the momentum. All right. So this is again definition that I am showing here, so that we have already covered. So the collision is said to be inelastic if the momentum is conserved but kinetic energy is not conserved. That is a sum of kinetic energy of the particle after the collision is either more or less or whatever may be, not be the same ultimately. Then one can simply say that it is a inelastic collision.
So in that inelastic collision, that also we have seen that this is basically transfer to the thermal energy or material deformation or sound energy or anything else. So that also we have seen. Now the next part is what do you mean by this perfectly elastic or perfectly inelastic collision? So the perfectly inelastic collision is simply, one can simply say that if one of the particle, say if the two particles are colliding with each other, if one of the particle is stick permanently to the another particle, that means one can simply say that it is a perfectly inelastic collision. So the definition that I have mentioned, in which the particles stick permanently together on impact and the loss of kinetic energy is maximum, which is consistent with the requirement of conservation law. So the perfect example is a bullet embedded in a target. Suppose आप बुलेट फायर करते हो, सपोज आपके पास टारगेट है, एक वॉल के अंदर आपने टारगेट माउंट किया है, and this bullet is embedded in that wall. That means one of the particle is stuck or both are permanently stick together. That means one can simply say that it is a perfect example of perfectly inelastic collision. So in which the potential energy is conserved since the after energy is converted into that heat energy. For example, जो last वाला ही हमने जो example लिया था, that was basically for the volleyball और basketball, और example लिया था, कौन सा example लिया था हमने, tennis ball का example लिया था maybe. So suppose yes. So when they stick together, so ultimately suppose कोई एक के साथ suppose collide होता है, so an atom may absorb some of the energy and it may get excited state also. That means excitation energy. For example, जो एक्सरे का एग्जांपल लेते हैं, एक्सरे है, that is another example of that जो statement लिखा है, that is excitation energy. So in this scenario here only the sum of the kinetic energy after the collision is different than the kinetic energy before the collision. But again, total energy, see, mind well, this total energy is basically kinetic energy plus potential energy. The total energy will not change, mind well. Kinetic energy will change, but not the potential energy. Sorry, not the total energy will not change. It may happen that kinetic energy will change. Say this is a perfectly inelastic collision, so definitely kinetic energy will not conserve. But when what happens with the potential and along with the heat energy and excitation energy, but the total energy, suppose if we consider the total energy, kinetic energy plus potential energy plus that other energies, then the total energy will conserve because it will basically transform from one form to the another form. So in the case of perfectly, the total energy will definitely, it has to conserve. You don't have any other option. Maybe आपने thermodynamics में भी पढ़ा होगा, total energy will not change. So now basically you are having some task basically for the case of all the cases that we have studied so far, that just try to identify in what you can say in a simple circumstances, or yes, in simple circumstances identify the velocity of the colliding particle basically after the collision. So what happens with the colliding particle after the collision, identify its velocity for particular cases such as यहाँ पर एक हमारे पास केस है, that is a perfectly inelastic collision. So let us consider the two colliding objects, say colliding particles, say m1 and m2, having initial velocity say v1 and v2 before the collision. Now you know that the term is m2 v2, and after the collision the two particles stick together and move with say combined velocity, that is your v. So your total, your v1 and v2 you will not be same after the collision. It will have a combined velocity, that is your v.
So the momentum of the particles after the collision is basically given by m1 plus m2 times velocity. So now just try to identify what will be your velocity after the collision. So you know that in any case, elastic or inelastic collision, your momentum will conserve in any scenario. So your moment from that momentum conservation law, one can simply identify what is the velocity after the collision. So you apply a conservation law, the linear momentum conservation law. So your after the collision is given by m1 plus m2 and the before the collision is m1 v1 plus m2 v2. So you see that you are saying that it remain conserved. So that means they both are equal. So from that you can equate both the equation and then you can simply identify your velocity would be m1 v1 plus m2 v2 over this m1 plus m2. बाय द वे ये जो क्वेश्चन जो अभी जो मतलब जो अभी जो ये स्लाइड जो पढ़ रहे हैं ना अभी ये स्लाइड जो पे जो लिखा है ना that is basically this question was asked in your last year exam. What would be the velocity after the collision in the case of perfectly inelastic collision? So please be mind well, just try to understand what is exactly happening in this case. Sir. Yes. सर इनइलास्टिक कॉलिजन में आपने बोला ना एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, तो सर उसी तरह से अगर इनइलास्टिक में एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा तो जो मोमेंटम है वो भी कंजर्वेशन नहीं होगा, ऐसा है? नहीं, see, keep in mind, in elastic as well as in inelastic collision, momentum will conserve. Both in both the cases, in both the cases, your total energy will conserve. Total energy, but in capital I am saying, but in the case of elastic collision, now I'm not talking about total energy, I am talking about kinetic energy only. Kinetic energy half mv square. So in the case of elastic collision, the kinetic energy will conserve in the case of elastic collision, but in the case of inelastic collision, the kinetic energy will not conserve. Yes. But in any kind of collision, your total energy will conserve. Mind well. All right. So the second point that I said that your inelastic collision, your kinetic energy will not conserve. So the point is, what will be the kinetic energy, whether it will be a higher or lower. If it is a higher, then how much higher? If it is a lower, then how much lower? That will be your next task, that you have supposed to identify what would be or what will be the kinetic energy after the collision. So here is a simple task that I have given here. This was also the question that was asked or that we have asked in your last year examination. So just try to identify in the case of perfectly inelastic collision, just try to identify what will be the velocity after the collision, and that we have seen in your last slide, and here we will try to identify what will be the kinetic energy after the collision and before the collision. So if you saying that if it is higher, then how much higher, and if it is lower, then how much lower. So that is what exactly we have mentioned here in this slide. So in the case of say perfectly inelastic collision, so you know that the lighter one will stick to the higher one, and they both will move with a velocity say of higher one only. So in the case of Saturn, if you consider the second particle at rest, so in that case scenario we have to identify, you have to take either of the particle will be at rest. So in the case of the second particle at rest, so say that your velocity of second particle is 0, then we will say that your velocity from the last slide, your velocity will be given by your v2 is 0, that means your m1 v1 over m1 plus m2. All right, so that will be your total velocity. See, this is a perfectly inelastic case as well as some more what you can say specific case.
case. All right, please mind well. So the kinetic energy, what was the kinetic energy before the collision if the particle, second particle was at rest? So in the case of kinetic energy before the collision, it was given by half m1 v1 square, and the kinetic energy after the collision was half m1 with m1 plus m2 into v square. So just try to identify or just take the ratio kinetic energy after the collision and kinetic energy before the collision. So you will have simple this equation, your half will cancel out. Just so what you will get is m1 plus m2 over m1 v1 square multiplied by your v square. So just put the value of this v from the first line and try to identify what will be the final answer. So this is I have directly mentioned, just try to solve this thing. Whether you are also getting the same or not, that please identify. I am giving you 2 minutes only. Just please wait. Are you also getting the same answer or not? Please wait. Sir, Yes. kinetic energy before collision is half m1 v1 square plus half m2 v2 square नहीं आएगा? Yes, it will be v2 square also, but what we are saying that we are taking the perfect example of, say you are hitting a bullet or you are throwing a bullet on the wall. So what will happen is that your wall is say stationary and you are throwing a marble or bullet. So what will happen is that your second particle, just assume that, or specific case of say your velocity of second particle is 0. So that is why I have put the v2 is 0. All right. Okay, so please wait. मैंने लिया नहीं है ये, आइडेंटिफाई करो पहले, बाद में बताओ कितना हो रहा, 1 हो, उससे ज्यादा हो रहा, कम हो रहा, या क्या हो रहा. Just solve this equation. Are you also getting m1 over m1 plus m2? Sorry? Yes, sir. Less than 1 year, sir. Yeah, definitely. It is a m1 over m1 plus m2. So just take the example of say bullet and a wall. So consider your v2 is a wall. That means your m2 is higher one and m1 is lower one. So if you take this m1 over, definitely this m1 over m1 plus m2, this again it has to be less than 1. Come on. In any case. So the point is the kinetic energy after the collision will be always less than the kinetic energy before the collision. So how much amount? Suppose say 10%, 20%. So from this you can actually identify the exact amount. Say that the kinetic energy will be less than this much amount before the collision. Is it clear? Any doubt up to this point? Yes, sir. Just tell me the doubt then. Do you have Sir, any last step नहीं sir. Last time कौन सा समझ में नहीं है? m1 over m1 upon yes sir. So are you also getting this m1 over m1 plus m2? No sir. Yes, sir. Yes or no? If no, then please Yes, solve sir. the equation. I have written everything. So your m1 plus, so half m1 plus m2 times m1 v1 over m1 plus m2 whole square. So this जो आपका जो पहले वाला था m1 plus m2 वो तो यहाँ पर कैंसिल ही हो जाएगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा. v1 स्क्वायर है वो डिनोमिनेटर में भी v1 स्क्वायर है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा आपका. m1 बचेगा, ऊपर आपका है m1 स्क्वायर और यहाँ पर है m1, तो m1 मिल रहेगा सिर्फ और m1 plus m2. So this m1 over m1 plus m2, you will get only this much amount, m1 over m1 plus m2, and this is always equal to 1. Sorry, less than 1. Sorry, it will be less than 1 because sum of two things. Suppose दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, से मेरे पास वॉलीबॉल है और मेरे पास टेनिस बॉल है, तो सपोज मेरे पास टेनिस बॉल ओवर टेनिस बॉल प्लस वॉलीबॉल, तो डेफिनेटली this ratio would be always less than 1, right? So that means one can simply say that your kinetic energy after the collision will always be always less than the kinetic energy before the collision. So what is the reason, और कहाँ रही है हमारी energy? So that energy, so suppose that we can simply identify, suppose आप wall को consider करो, तो वो जो energy रही आपकी कहाँ रही, that is energy is transfer
So suppose a bullet ने, the bullet has transferred that much amount of energy to the wall. तो आपका जो वॉल के जो नियर बाय जो एरिया हो रहा है वहां पर मे बी थोड़ा सा हीटअप हो रहा होगा और वहां पर थोड़ा सा डैमेज हो रहा वॉल के अंदर. So that is the amount of energy that is used to heat up the wall and other things. Is it clear? Yes, sir. Clear. All right. Yes, sir. All right. So let us proceed further. Let us proceed further. Okay, just a minute. Let me check. कोई है कि नहीं है? Good. नहीं है. Okay, just a minute. I am taking the attendance now. Download. Yes. Just a minute. Just a minute. All right. So let us proceed further. So what will happen in the velocity of the particle if you want to identify the velocity of the particle in the case of one-dimensional elastic collision? So what will happen in the case of elastic collision, particularly the case of say only one dimension? So in the case of say elastic collision, you are already aware that it has to, or the linear momentum and kinetic energy both are conserved in both the case, in this particular case, say elastic collision. So keep in mind, this is only in one dimension that we are talking about. We are not going for the two dimension, because the two dimension will be quite difficult, or not difficult, it will be very complex object, complex thing that we will show after maybe 2 or 3 slides. So in the case of say one-dimensional collision, so let us assume that we have a two-body object, say M1 and M2, with the masses of two particles, U1 and U2, and V1 and V2 with the respective velocities before and after the collision along the line joining the centers. So this is case of one-dimensional elastic collision. So you know that your kinetic energy and the momentum has to conserve. So your momentum equation is given by this equation, and the kinetic energy given by simple this equation. So can you identify what will be the case of, so what we need to identify is what will be the final velocity. Say final velocity here in this case is V1 and V2. So can you identify this V1 and V2? So yes, definitely we can identify this thing. So what you will have to do is you have two equations and you have to identify two unknowns, say V1 and V2. So how you can do this thing is simply just rewrite the equation in terms of say M1 वाला terms एक side पे ले लो आपका, तो you will get M1 U1 minus V1 and right hand side suppose momentum वाला equation consider करें हम लोग. So here one can simply identify that M2 V2 minus U2, and similar way what happened with the kinetic energy, your half will cancel out from each and every sides. So what you will get is M1 U1 square plus M2 U2 square over 1 M1 V1 square plus M2 V2 square. Just put all the equation, say this equation M1 वाला एक side पे ले लो, M2 वाला एक side पे ले लो. So what you will get is M1 U1 square minus V1 square equal to M2 V2 square minus U2 square. Simply divide each other and identify what you are getting. Just can you do this simple trivial task? Yes, sir. Okay, Yes, sir. wait. Identify whether you are Yes, also sir. getting the same or not. Identify, please. Wait. Yes, sir. Yes, please wait. Yes, sir. Yes. Are you also getting the same? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So your U1 plus V1 equal to U2 plus V2.
So the point is, thus in the case of in elastic one-dimensional collision, the relative velocity with which the two particles approach each other before the collision is equal to the relative velocity which they recede from each other after the collision. So the point is, suppose relative velocity will remain conserved. So actually ये last जो statement लिखा है, that is a simple एक typing error है by the way. So please sorry for that. In the case of elastic one-dimensional collision, not inelastic, मैंने inelastic लिखा है गलती से. In elastic one-dimensional collision, the relative velocity with two particles approach each other. So the point is that I am going to convey is, suppose before the collision my velocity was u1, and after the collision velocity is your u1, sorry v1. So the relative velocity, suppose उसकी जो change हुआ velocity में, u1 का जो v1 हुआ, so the u1 and v1, the summation of this u1 and v1 will be equal to same as u2 plus v2, or else you can also write it like u1 minus u2 equal to v2 minus v1. That means the relative velocity with which the two particles approach each other before the collision is equal to the relative velocity with which they recede from each other after the collision. So that is the simple meaning. Is it clear? Yes. All right. Yes, sir. So in this case, Yes, so sir. from this above equation, what we can simply identify is your v1 will be equal to simply v2 minus u1 plus u2, and v2 it will be v1 plus u2 minus u2. Just substitute these values in your momentum equation and solve for v1, you will get simple this kind of equation. So can you do this in simple calculation? Please be quick. Yes, sir. Please be quick. We are having 2 or 3 minutes, not more than that. Please be quick. सर ये सेकंड इक्वेशन में u1 आएगा. u1 आएगा u. Yes. This second equation v2 is equal to v1 plus u1 minus u2 होगा. Just go with the previous slide and just identify. So what you need to identify is your v1 and v2. Your v1 will be u2 plus v2 minus u1. So v2 plus u2 minus u1 आएगा. हाँ तो minus u1 है. And what about the second equation? v2 will be equal to u1 plus v1 minus u2. That's it. It is the same. Now substitute the value of this v2 in your momentum equation and solve for v1. That's it. Sir, second equation please verify. नीचे वाला equation? No. Which equation you are asking? I am not getting. Sorry. v2 is equal to v1 plus u2 minus u2. Yeah. There is a simple typo error. So your v2 would be
U1 plus V1 minus U2. V1 plus U1 है, U1 है, not U2, U1 है ये. V2 equal to Yes, sir. V1 plus U1 minus V1 U2. plus That's why I am minus asking. U2. Just yes, that's why I am asking. Just try to verify what you are getting. So there is a simple typo in your slide number 12. U2, it is a U1. Sorry? Here V2 equal to V1 plus a U1. Yes, yes, yes. There is a simple typo error. Sorry. सर यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में 2m2 की जगह 2m1 आएगा ना? That's why I'm asking. Just verify. I have written sir. simple equation. Yes. So whatever is the typo error, just you can easily verify. So the point is you can easily calculate. That's not the point. All right. So yes, let us proceed from this equation. You can easily, you are getting almost similar. V1 is maybe you people are getting the V1 and V2 will also you will get. Maybe there are some typo, but you can easily identify that is nothing to worry about. All right. So let us proceed. So now let us go with the what will happen. Now what will happen if you try to identify everything inside 2 or 3 dimensions. So in this case the what you know that you have to take care of conservation loss. Now in the case of 2 and 3 dimension, it would be, I will say it would be quite not, it will not be that much trivial cases. So in this case, the initial velocity of the particles and the conservation of momentum kinetic energy are not enough basically for the determination of the velocity of the particles after the collision. So this is because the velocity of each particle has 3 components, but we have only 4 known relation, 3 for the conservation of momentum, that is the conservation of momentum in all 3 dimensions, and you will have a 3 dimension and 1 for the conservation of energy, kinetic energy. That means what you need to do is you should need to have some kind of basic more information so that you can identify your collision process in 2 or 3 dimensions. So in order to basically what you can say, in order to study all these things, so that is the basic requirement of, then here actually comes the requirement of considering the frame of reference. So I hope you people are aware of frame of reference. Am I clear? Are you aware of frame of reference? No, sir. Or I सर ये sorry? No, sir. यही पता है Yes, कि sir. इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाद में नहीं पता. Yeah, fine. Yeah, you are right. Frame of reference. There are many kind of frame of reference, inertial and non-inertial. That is secondary. I will come to that point later on. The point I'm asking for right now is: are you people aware of frame of reference? What do you mean by frame of reference? What is the importance of frame of reference? Are you people are aware of this thing?
No, sir. No, sir. Okay, fine. No problem. No, No problem. sir. So let's just go first of all to understand what is the meaning of this frame of reference. So basically, okay, let me give you a extremely simple example. Extremely simple example. So the point is, for example, एक आपका जो लेक्चर्स होते हैं, आपके जो क्लास के जो लेक्चर्स होते हैं से 1 आवर के होते हैं. ओके ओके, उसके ऊपर बाद में आता हूँ मैं, वो वाला एग्जांपल पे बाद में आता हूँ. पहले मैं यहाँ पे आता हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बेसिकली से दैट फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग द ऑब्जर्वेशन. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आप सपोज आप एक बस का एग्जांपल है, जो बस जो जा रही है. तो फॉर एग्जांपल बस में कुछ आपके फ्रेंड्स बैठे हैं, 5-6 लोग बैठे हैं बस के अंदर, और आप यहाँ से आप ऑब्जर्व करते हो बस के बाहर से. So what you people will observe is that you are stationary and your bus is moving. So your friends are moving in your bus. And let us go in another way. Another way means other way round, कि आप बाहर खड़े हो और आपके जो फ्रेंड्स है वो बस में हैं. So what your friend will observe that आप तो बैठे हो शांति से, आप भूल जाओ कि बस मूव हो रही है. बस तो मूव हो ही रही है, but what you will feel that your friends are also जो बाहर बैठे हैं, that you will feel that they are moving in backward direction, not in forward direction. Am I right? Yes, sir. Okay. Let me repeat this example. Suppose आप साइड पे रोड पे खड़े हो और आपके कुछ फ्रेंड बस से जा रहे हैं. सो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि बस के में जो फ्रेंड्स बैठे हैं वो जा रहे हैं क्योंकि बस जा रही है. तो बस के अंदर आपके फ्रेंड्स डेफिनेटली आपके दोस्त भी, फ्रेंड्स भी सब जा रहे हैं. एट द सेम टाइम सपोज आपके फ्रेंड्स को क्या लगने वाला है कि भाई हम तो ठीक है, बट आप जो बाहर खड़े हैं दे आर गोइंग इन अपोजिट, वो पीछे जा रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में. सो द पॉइंट इज यू पीपल आर साइमल्टेनियसली, आप दोनों अपने अपने पॉइंट पे सही हो, आप दोनों अपने अपने पॉइंट पे सही हो, बट क्या होगा कि सपोज कहां से आपने मेजर किया दैट ऑल्सो मैटर्स, कौन कहां जा रहा है. एम आई राइट? अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग अभी वीडियो लेक्चर बैठे हो, तो सपोज आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो आपके घर वालों को पता होगा कि हाँ भाई ये लेक्चर देख रहा है, इसीलिए कोई कैलकुलेशन कर रहा है या तो कोई ना कोई मतलब सपोज वीडियो में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कैसे कहीं रिस्पॉन्स दे रहा है. अब सपोज आपके घर वाले को पता है कि ये बंदा ये कर रहा है, बट सपोज जो घर के बाहर है, सपोज विंडो के आसपास बैठे हो, विंडो से कोई बंदा दिख रहा है, उसको क्या लगेगा कि भाई ऐसे कुछ भी कर रहा है, ये तो ऐसे ही हाथ हिला रहा है, मस्ती कर रहा है, हंस रहा है, कभी कभी बैठा है शांति से. सो व्हाट ही विल फील दैट यू पीपल आर मैड कि कुछ भी काम कर रहा है, पर आपके घर वालों को पता है कि भाई ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है. सो द पॉइंट इज आप तो नॉर्मल ही हो, बट आपके घर वाले को पता है क्या हो रहा है, पर जो बाहर वाला जो बंदा आपको दिख रहा है वो उसको लगेगा कि भाई ये कुछ और ही कर रहा है, ये तो पागल हो रहा है. सो द पॉइंट इज ये सब चीज जो मेजर करते हो, जहां से मेजर करते हो, दैट इज एक्चुअली फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जहां से आपने अपना मेजरमेंट शुरू किया. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूं. आपके पास स्केल है, सपोज मेरे पास मेरा मोबाइल है, मैंने मेजर किया कि भाई मेरा मोबाइल की लेंथ है से 10 सेंटीमीटर, पर वो तब कहाँ कैसे 10 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने 0 से शुरू किया. अब सपोज मैं वही स्केल से यूज करूं जो बीच में से टूटी हुई, फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर के बाद वो कट लगा है, तो 2 सेंटीमीटर से कट लगा है, तो मेरे जो मेजर करूंगा दैट विल बी अ 12 सेंटीमीटर. सो द पॉइंट इज इट विल शो 12 सेंटीमीटर, पर अब पता है कि वो टूट गया, तो आई विल टेक केयर ऑफ दैट 2 सेंटीमीटर. पर सपोज नहीं पता हो कि कैसे करना है, तो दैट आई विल से दैट भाई वो 12 सेंटीमीटर की लेंथ है. सो द पॉइंट इज दोनों तरीके से वो तो सही है, जैसे जिस फ्रेम में मेजर किया दैट frame of reference is important. So this is a concept of frame of reference. The frame of reference is basically from where you are doing the measurement. Are you getting it or not? From where Yes, sir. you people are doing the measurement, that is a frame of reference. Am I clear? So Yes, sir. Yes, before sir. studying anything, before studying any process,
one should know what is or from where you are taking the measurement. अब फॉर एग्जाम्पल वही है कि ट्रोय में लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो ट्रोय ने किसी ने कैलकुलेट किया, वही चीज तो कुछ जो किसी लोगों ने कैलकुलेट अपने नोटबुक में भी किया और बताया कि भाई ये डाउट है, सो दैट मीन्स, और कई लोगों ने नहीं भी किया। सो द पॉइंट इज, किसी के लिए वो इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं भी है। सो द पॉइंट इज, पढ़ा तो मैं सभी को सेम रहा हूं, बट फॉर योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसने कैलकुलेट किया उसी के लिए वो नेसेसरी है, जिसने नहीं किया तो वो कंसिडर करता है कि भाई नहीं जरूरी है। सो द पॉइंट इज, ऑब्जर्वेशन तो एक ही है, काम टास्क एक ही दिया है, पर किसी के लिए वो जरूरी है तो किसी के लिए नहीं भी जरूरी है। तो दैट इज द मीनिंग कि भाई ये फ्रॉम वेयर यू आर मेजरिंग द dynamics or any other thing. So that is the concept of a frame of reference. So there are basic type, very extremely basic type of frame of or category, one can simply say कि किसमें divide होता है। So first one is your center of mass and the other one is laboratory frame. तो सेंटर ऑफ मास आपको पता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ मास, आपको पता है, आपको भी पता है, अच्छे पता ही होगा 12th में, वेयर वन कैन सिंपली से कि सपोज आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, तो सपोज कोई इट्स नॉट मेड अप ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, वो बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, सिमिलर टाइप भी हो सकता है। सो वेयर फ्रॉम वेयर पूरा सभी ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पे सेंटर होता है उसका कॉन्सेंट्रेट होता है जिस पॉइंट पे, दैट इज बेसिकली योर सेंटर ऑफ मास। ऑलराइट, so the first concept is the center of mass frame of reference, the other one is a laboratory frame of reference. That means what, the center of mass का frame of reference suppose मैं laboratory में देखे center of mass देखूँ तो पता चलता है कि भाई वो कहाँ किस point का object है। So the point is center of mass में क्या variation आता है, कहाँ से ये change होता है, वो identify करो। The other one is your laboratory frame of reference. See, mind well this frame of, suppose आप physics में रहने वाले हो और maybe I don't know मैथमेटिक्स में भी शायद आता होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट स्टैटिस्टिक्स, बट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेजरमेंट्स आर एक्सट्रीमली क्रूशियल बिकॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आई विल से कि विदाउट नोइंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस यू कांट जज एनीथिंग। Am I getting? Are you getting my point? Yes, sir. Before Yes, sir. knowing Yes, or sir. without awareness of frame of reference, it is not possible to know the exact dynamics of anything. So the basic is center of mass frame of reference. If the origin of the reference system is point rigidly fixed to the center of mass of a system of particle, on which basically no external forces acting, is known as center of mass. In the center of mass frame of reference, the position vector of center of mass is at center, it is center of mass at the origin of a reference system, and we assume that your at center of mass your velocity is 0, and so the linear momentum is 0. That means it is a 0 momentum frame, it is not moving. And in the case of laboratory frame, if the origin of the reference system is a point rigidly fixed to the laboratory, for example अभी जो भी हमने मेजरमेंट का जो लास्ट स्लाइड तक जो भी हम स्टडी कर रहे थे, दैट वाज इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लेबोरेटरी। हम मटेरियल, सपोज हम टेनिस बॉल के अंदर जाके हम नहीं मेजर कर रहे थे, हम मेजर कर रहे थे दोनों से बाहर का। दैट मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल वो जो एग्जांपल दिया था, बस में आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं और आप बाहर खड़े हो, तो सपोज वही प्रोसेस को कोई थर्ड बंदा कोई और दूर बैठा उसको मेजर कर रहा है, तो सपोज वो मेजर कर रहा है तो वो बोलेगा कि भाई मैं अपने लेबोरेटरी, मैं अपने फ्रेम में बैठा हूं, तो भाई मुझे पता है कि वो जा रहा है और वो यहाँ पर बैठा है। अदरवाइज आपके लिए आपके फ्रेंड्स जा रहे थे, आपके फ्रेंड्स के लिए आप लोग जा रहे थे, तो जो थर्ड बंदा बैठा है उसको रियल में सब कुछ पता है कि भाई हो क्या रहा है, मतलब नॉट ओनली सब कुछ पता है, द पॉइंट इज इन हिज फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो बाहर खड़े है वो स्टेशनरी है और जो बस में है वो जा रहा है, दैट इज मूविंग। So that is known as basically your laboratory form. Is the origin of the reference system is a point rigidly fixed to the laboratory is known as the laboratory frame of reference.
The laboratory frame of reference is basically inertial as long as the earth is taken to be the inertial frame. What do you mean by inertial now? Inertial and non-inertial, कहीं से आपके friends ने बताया था. What do you mean by this? Inertial and non-inertial. So the inertial means where Newton's law of motion valid. For example, आपका F equal to ma है. ये जो इक्वेशन जहां पर भी वैलिड रहता है, दैट मीन्स इट इज नोन एज द इनर्शियल फ्रेम. एंड बाकी जहां पर भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं रहता, दैट इज योर नॉन इनर्शियल फ्रेम. ओके, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? दैट इज अ प्रॉब्लम. व्हाट और कौन सा ऐसे कौन सा एग्जांपल है जो जहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है? कैन यू गिव मी सम एग्जांपल? Pseudo force. Wrong. Pseudo force. What? See, Sir. what do you mean by pseudo force now? Pseudo force is the force which generally we don't see feel. during. Yeah, we don't feel, but we observe it naturally while we is are happening. sitting in bus. Something is Yeah. something is happening, but we don't know the reason. That's why we Yeah. maybe we call it a pseudo. No, by the way, no. In space, sir. Sorry. In space. No, in space it can be possible. So it can be possible here only. See, the point is the inertial and non-inertial has to deal with your velocity. Actually, for example, आपकी जो velocity, आपको भी पता है what is the velocity of light? Velocity of light is आपको भी पता है 3 into 10 to the power 8 meter per second. And you might have studied, you might have gained some feeling of relativistic and non-relativistic something. So suppose what is exactly happening is that if the velocity, if some particle is moving with a very high velocity, are you getting my point? If the velocity of the particle is a very high velocity, in this case sometimes it happens that suppose कि velocity certain limit से ज़्यादा हो जाती है, so in that scenario what will happen is that your mass थोड़ा सा चेंज होता है. थोड़ा सा चेंज वो मैं अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ, बट इन प्रिंसिपल वो थोड़ा ज़्यादा भी होता है. सॉरी, मैंने एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट आपको बताया, आपके लिए हाइपोथेटिकल उसका प्रूफ भी है. वैसे I will come to that proof part later on. The example is, let me give a very simple example. Wait, let me complete first. I will come to you all also. For example, मेरे पास तो एक ऑब्जेक्ट है. For example, तो एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास से 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, बट सपोज वो 1 किलोग्राम सपोज वो मूव कर रहा है बहुत ही ज्यादा हाई वेलोसिटी से, बहुत ही ज्यादा हाई वेलोसिटी. कीप इन माइंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी जो आप देख रहे हो 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट स्मॉलर वेलोसिटी, Supersonic. I am talking about the velocity which is very high, up to velocity of light, up to the velocity of light. So in that scenario what will happen is that your mass will not be the same as the mass that was previously. उसके मास में थोड़ा सा चेंज आएगा. दैट इज द कंप्लीट थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, जिसके लिए मतलब बहुत ही नोन है आपका, मतलब मैं भी पढ़ा हो रहा, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन पढ़ा हो रहा. रिलेटिविटी, रिलेटिविस्टिक थियरी ऑफ रिलेटिविटी, द थियरी फॉर, सॉरी, इक्वल टू mc स्क्वायर आपका फिशन और फिजन में आता है, मतलब वो एनर्जी का मास में, सॉरी मास का एनर्जी में कन्वर्जन. यस, वो नियर बाय है, बहुत ही नजदीक में है. बाय द वे, ये जो बोल रहे हो ना सर, इक्वल टू mc स्क्वायर, इट इज वेरी नियर टू दैट पार्ट. v equal to v0. सॉरी बोलो. v equal to v0 upon 1 minus v square by c square under root वाला वो. exactly. Heisenberg's uncertainty principle. नो, बहुत दूर है अभी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. वो क्वांटम मैकेनिक्स में आएगा मे बी सेकंड ईयर, वो अभी बहुत दूर है. पर अभी जो आपके जो फ्रेंड ने, या मे बी नियर बाय, पर अभी आपके एक फ्रेंड ने बताया था, एक सिंपल इक्वेशन बताया था कि विच इज हैज समथिंग टू डू विद इन डिनोमिनेटर 1 minus v square by c square. ओके,
लेट मी गिव वन मोर सिंपल एग्जांपल. आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, आप ट्रेन में बैठे हो, सपोज आपकी ट्रेन की वेलोसिटी है आपकी कितनी है कि भाई वेलोसिटी ऑफ लाइट जितनी है. ऑलराइट, एम आई गेटिंग, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes. ओके, सपोज आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन की वेलोसिटी है भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एग्जैक्टली. नो डाउट आपको भी पता है इतनी पॉसिबल नहीं है. लेट अस अज्यूम कि वो इतनी वेलोसिटी से जा रही है ट्रेन. आप ट्रेन में बैठे हो और आप क्या कर रहे हो, एक मस्ती कर रहे हो कि भाई ट्रेन से आप बैठे बैठे पत्थर आप बाहर डाल रहे हो. जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, सपोज मेरी ट्रेन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है, तो आप जो स्टोन आप पत्थर डाल रहे हो बाहर, वो भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डाल रहे हो. सो कैन यू से व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दैट? सपोज आपने जो स्टोन आपने जो थ्रो किया बाहर, सपोज उसकी वेलोसिटी है 10 किलोमीटर और 10 मीटर पर सेकंड. सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी? आपने डाला 10, पर सपोज मैं बाहर बैठ के मेजर कर रहा हूँ, तो उसकी वेलोसिटी कितने मेजर करूंगा मैं? स्पीड ऑफ लाइट प्लस 10. ओके, स्पीड ऑफ लाइट प्लस 10. वेरी गुड, इट्स अ वेरी ट्रिवियल थिंग. बट आपको भी पता है एक कंसेप्ट कि भाई वेलोसिटी जो मेजर करते हो, मतलब उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, दैट इज अ मैक्सिमम वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट. नो वन कैन ट्रैवल विथ अ वेलोसिटी मोर देन स्पीड ऑफ लाइट. पता है आपको? ये पता, ये भी पता है, साइंस में है वो, तो आपको ये भी पता है, राइट? यस सर. Okay, so good. So you got the point now. Suppose in that scenario, that means what? Your velocity का जो आप addition करते हो, v equal to v1 plus v2, it required certain correction terms. That is insufficient information, I will say. उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है. एक डिनोमिनेटर में टर्म आएगा √1 minus v² by c², जो अभी आपके एक फ्रेंड ने बताया था. That means one has to add some correction. Because you can't have the velocity, you can't have more than velocity of light. So the point is, one has to have that kind of correction factor. Then and then it is true. So the point is, जो हम assume करते हैं कि velocity is simply addition, v equal to v1 plus v2, that is applicable for the low velocity. If the velocity is higher up to say speed of light, then this concept will differ. So there is a whole new subject, I will say, for studying this kind of mechanism, that is your relativity, theory of relativity. Just search करना Google पे जाके, what is the theory of relativity. Albert Einstein का पिक्चर आएगा, उनकी theory पूरी बताएगी. All right. So Hello, sir. when the velocity is very high compared to the velocity of light, so in that scenario your fourth law will not hold. जो third law of motion, ये जो Newton's law of motion will not hold. उसके लिए कुछ ना कुछ changes उसके अंदर करने पड़ेंगे. So that is known as your inertial as well as the non-inertial frame of reference. So laboratory frame is basically inertial as long as Earth is taken to be the inertial frame of reference. हाँ, कुछ बता रहे थे आप? सर, जैसे आपने बताया कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के नियर जाएंगे तो न्यूटन्स लॉ जो फॉलो नहीं होंगे. अब वो रॉकेट वाला एक किस्सा आता है जिसमें रॉकेट का जो जो क्या होता है, ऑयल होता है, वो कंटिन्यू कम होता जाएगा. तो उस केस में भी मास का डिफरेंस आएगा, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ उसमें भी शायद फॉलो नहीं होगा ना. जैसे कि P हम F इक्वल टू dp by dt फॉलो होगा, उसके अंदर फॉलो होगा, बिकॉज जो रॉकेट जो कर रहे उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, इतनी ज्यादा हाई वेलोसिटी रॉकेट की नहीं होती. तो फिर हमें न्यूटन्स लॉ में F इक्वल टू ma कैसे मिलेगा? कि F इक्वल टू dp by dt जो है उसमें P इक्वल टू mv यूज करेंगे. जो वेलोसिटी में जो चेंज आता है, दैट इज इक्वल टू योर फोर्स. जो आप जो बोल रहे हो ना, जो डाउट ये जो उसके ऊपर आई विल कम टू दैट. आ रहा है ना, या देयर इज अ वेलोसिटी, सी कंटीन्यूअसली उसकी इंक्रीज हो रही है एक्चुअली वेलोसिटी भी, बट इट विल नॉट रीच अप टू वेलोसिटी ऑफ लाइट. नो वन कैन रीच अप टू वेलोसिटी ऑफ लाइट. उसका बेसिक एग्जांपल है आपका, आपको भी पता है कि ये जो सपोज ये जो रॉकेट सपोज जो स्पेस में जाते हैं,
जो रिटर्न आते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि सपोज जैसे जैसे स्पेस में आने लगे तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी अट्रैक्ट तो हो रहा, बट एट द सेम टाइम वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। तो आपको भी पता है जैसे वेलोसिटी इंक्रीज भी होती है थोड़ी सी लिमिट से ज्यादा, तो आपने शायद सुना भी हो रहा थी दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द वेलोसिटी। अब आपको लगेगा कि भाई नीचे ही आना है तो क्यों टेंशन लेना, जल्दी आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। बट आपको भी पता है जैसे वेलोसिटी थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही, so what will happen, because it will interact with the atmosphere and it will generate the heat। जो एक्सीडेंट हुआ था कल्पना चावला, जो 2000 आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट ईयर, जो एक्सीडेंट हुआ था वहां पर भी वही हुआ था कि जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर हुए उनकी वेलोसिटी दे कुड नॉट कंट्रोल, बहुत स्पीड में आए और जैसे ही एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट हुआ वेलोसिटी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, पूरा एक्सीडेंट हो रहा था, पूरा बर्न हो रहा था पूरा स्पेसक्राफ्ट। Yes. So the point is, even if I am trying to say that yes my velocity, suppose velocity of light से तो भाई बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे हर जगह पे, पर आपको भी पता है कि वेलोसिटी जैसे ही बढ़ेगी मास भी फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आपको भी पता है कि इवन जो आपका सपोज आप बाइक ड्राइव करते हो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पे जाओ, तो आफ्टर सम टाइम आपको भी पता है कि अब टायर का में भी प्रेशर बढ़ जाता है। तो वो भी है कि आप वहां पर कंटिन्यूअसली इतनी स्पीड से वो भी नहीं जा सकते, राइट? एम आई राइट? सो द पॉइंट इज, जितना इजी कहना है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से जाना, इतना भी डिफिकल्ट है कि इतनी वेलोसिटी से जाना, क्योंकि हमारे पास ऐसा मटेरियल नहीं है जो उतनी वेलोसिटी पे सस्टेन कर पाए। ऑलराइट, सो these are a whole new topics actually that we can discuss maybe later on after maybe some time. So yes, let us stop here because after 1:15 exact time ho chuka hai, so let us stop here, and from tomorrow we will go for the other part of this theory, and then onwards I will share this particular what you can say, this particular PDF also, and maybe tomorrow itself we will go with the rotational motion also. All right? Yes. Is it Okay, sir. clear? Okay, sir. All right. Okay. Thank you. Yes, Thank you sir. very much. Okay, Have a sir. nice Thank day. you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you. Bye.